Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Zora Sarwar Khan, and on behalf of Innovation Office at SECP, I welcome you all to today's panel discussion. We are joined by a distinguished panel of experts, Mr. Baqar Jaffri, Dr. Ammar Ahmed Siddiqui, and Ms. Noshaba Awais, who will be sharing their invaluable insights during our discussion. So during the next 1 hour, we will be discussing current fintech ecosystem in Pakistan, key challenges and strategies on fostering startups, how to integrate fintech knowledge into curricula, and grounds of collaboration between industry and academia. Before we start, I think there's a need to give a little context of why we are holding today's session. As some of you might be aware that the Innovation Office at SECP is mandated to promote startup culture and facilitate SECP's regulatory sandbox. Without going into granular details, I'll just quickly go through few amendments that were made in Companies Act, specifically with reference to promoting startups' use of financial technology and creating environment to test and assess the impact of innovative technology outside the existing regulatory framework. SECP also introduced regulatory sandbox guidelines in 2019, followed by 4 cohorts starting from year 2020 till 2023. Further, in year 2023, we revamped the regulatory sandbox from a cohort-based system to an open status, which primarily means that we now allow applications throughout the year. And there are 3 streams in the regulatory sandbox. First is Islamic finance, then there's conventional finance, and women-specific trades. So in a span of relatively very short period, which is 4 years, SECP has introduced regulatory reforms based on results of sandbox testing. These includes amendment made in non-banking finance companies regulation with respect to providing a comprehensive enabling framework for peer-to-peer lending. In context of mutual fund digital distribution and robo-advisory, guidelines have been issued encouraging use of fintech for distribution and advisory purposes. On insurance side, digital micro-insurance, the Takaful, we have introduced regulatory framework for micro and digital-only insurer. And amendments have also been proposed in Securities Act to formalize a regulatory framework for equity crowdfunding, which is generally an area of interest also. So previously, Innovation Office was holding different seminars on promoting corporatization, and we had also a few seminars with the national incubation centers. Considering now applications in Sandbox are open throughout the year, and plus there's enhanced understanding, we are now moving towards focused discussion. And today's session specifically is first step in this direction, where the speakers will touch upon the fintech ecosystem in Pakistan, fintech being an enabler for financial literacy and financial inclusion, and how can more cohesive connections be built between industry and academia. Although the context is a little long, but I think this was particularly important for giving an overview to participants that have joined us both from the industry and particularly academia today. I will start by introducing our esteemed panelist. Joining us first is Mr. Baqar Jaffri. He is CEO of Investor Lounge and founding director of Pakistan Fintech Network. Mr. Baqar is a leader in financial technology and an award-winning entrepreneur with over 14 years of in-depth experience in financial markets, data analytics, and digital innovation. He has first-hand experience of SECP's regulatory sandbox, where he introduced robo-advisory technology in Pakistan. He's also served as financial technology advisor to Pakistan's top brokerage firm. He holds MS in economics from IBA with a focus on financial econometrics, along with various specialized courses in financial technology, artificial intelligence, and investment management.
He also holds ICAP's directorship certification for listed companies. I welcome Mr. Baqar to the discussion. Our second panelist is Dr. Ammar Siddiqui, currently serving as an assistant professor and cluster head of economics and finance at Iqra University. He has earned his PhD in France and has also served at HEC Paris with respect to research. His professional journey started in 2010 within the investment and fund management domain, and his academic career in 2013 at esteemed universities in Pakistan. Dr. Ammar actively participates in initiatives and dialogues for fostering collaboration between industry and academia, with a focus on enhancing financial literacy and promoting financial inclusion, with collaboration with universities as well as key institutions, namely NABAF Pakistan, Investor Lounge, We Financial, and Pakistan Mercantile Exchange. I welcome Dr. Ammar to the discussion. And our next speaker is Ms. Noshaba Awais, who's the Director of Research for Innovation Division at the Higher Education Commission of Pakistan. Ms. Awais has been instrumental in driving initiatives to enhance research and innovation through her association with HEC since 2001. As director, she's managing various flagship programs that include establishment of business incubation centers, 89 offices of research, innovation, and commercialization, support to 55 centers of excellence for research at different universities across Pakistan, and an execution of World Bank supported innovator seed fund program. Further, she has most recently spearheaded the development and launch of HEC's research and innovation portal for building academia industry linkages and automating reporting process between HEC and universities. Her mandate includes supporting national research, furthering academia industry linkages, and facilitating commercialization of academic research. I welcome Ms. Noshaba to the discussion. So let's just dive into our discussion. I will start with you, Baqar, from the basics. Just tell us about what is fintech, what are the current trends and development in fintech ecosystem in Pakistan? Assalamu alaikum. Am I audible? Can you please confirm? Yeah, you're audible. Great. First of all, thank you very much, Zora. It is a wonderful opportunity, by the way, and I'm really, really happy that SECP is leading innovation in this direction. So, जितने भी लोग हैं जो बुनियादी fintech की जो understanding है उसको lack करते हैं, हम वहाँ से build करते हैं. Let's say, let me give you an example, by the way. So, you see a financial transaction. ये 5,000 का नोट है आपका. ये दो हाथों में लेन देन, इसकी रद्दो बदल और एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं. ये किसी चीज के नतीजे में हो सकती है. आया बैंक अकाउंट खुलवाएं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टिंग करें स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस सर्विसेज लें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सो इस पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होना, अगर टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसकी स्पीड बढ़ा सके, नंबर 1, दैट इज ऑनलाइन इन्वेस्टिंग. अगर आप स्पीड के साथ उस सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके, डिजिटल बैंकिंग लेट्स से, या रियल टाइम लोन अप्रूवल एप्स. सो टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीड का बढ़ा देना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में. नंबर 2, लागत कम कर देना उस ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं. लेट्स से रास्ट फॉर एग्जांपल के पेयर टू पेयर ट्रांसफर, लेकिन लागत कम कर दी, फाइनेंशियल कॉस्ट कम कर दी आवाम के लिए कि वो आसानी से ट्रांसफर कर सके. सो स्पीड बढ़ा दी टेक्नोलॉजी की मदद से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लागत कम कर दी. फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट ETFs जिस पे SECP काम कर रहा है, काफी इंट्रोड्यूस भी कराए हैं. देन रोबो एडवाइजर जिसके SECP इनोवेशन और सैंडबॉक्स में प्रॉपर रेगुलेशंस और गाइडलाइंस आई हैं. तो इन टेक्नोलॉजीज की मदद से लागत कम कर देना ट्रांजैक्शन की, और लागत कम कर देना और स्पीड बढ़ा देना, ये दो ऐसी चीजें हैं अगर आप इसको अचीव कर लें टेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप माली जो सर्विसेज हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसको एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं. सो दैट्स अ थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, कि आप ये फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑडियंस बढ़ा दें या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रसाई मुमकिन बना दें. दैट इज कॉल्ड एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी. लेट्स से माइक्रो लैंडिंग, डिजिटल माइक्रो लैंडिंग, लेट्स से क्राउड फंडिंग, जोरा ने अभी आपको बताया कि उसकी गाइडलाइंस आ रही हैं.
देन फ्रैक्शनलाइज रियल एस्टेट जिसकी ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। सो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कि टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तमाम प्रोसेस को सिक्योर बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन, डिजिटल केवाईसी, या लेट्स से एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये चार पिलर टेक्नोलॉजी के जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को की स्पीड बढ़ा दें, उसकी लागत कम कर दें, ज्यादातर लोगों तक इसकी रसाई मुमकिन बना दें, और ये पूरा प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर और सेफ बना दें। इन तमाम तर स्टडीज का जो कल्मिनेशन है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में, कन्वेंशनल फाइनेंस, यू हैव सीन दैट, एंड दिस इज द न्यू फील्ड। रिलेटिवली दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ओवर द पास्ट 3 years, इफ जोरा अलाउज मी, के 3 साल, पिछले 3 साल में हम देखते हैं कि एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ कोर इंस्टीट्यूशन दैट लेड टू द इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग। हमने देखा कि बैंक अकाउंट्स स्टैंडर्डाइज हो गए आईबीएन नंबर के थ्रू, प्लस ईएमआई लाइसेंसेज, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन लाइसेंस आ गए कि आप डिजिटल पेमेंट आसानी से कर सकते हैं कम लागत के साथ। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिजिटल बैंकिंग लाइसेंसेज आ गए कि आप उन बैंक्स को जो ऑनलाइन ऑपरेट करना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें। देन एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल ऑन बोर्डिंग आ गई कि कस्टमर जो दूर रहते हैं और फिजिकली आउटरीच नहीं है सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक, उनको आसानी से ऑनलाइन ऑन बोर्डिंग करें। So ये 3 से 4 core developments on the part of state banking in the past 3 to 4 years. SECP की तरफ से एक core implementation हमने देखी over the past 3 years. Zora highlighted that correctly कि SECP ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की इनोवेशन को देखते हुए उन नए स्टार्टअप्स को और कंपनीज को ये मौका फराहम किया कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज को एक क्लोज सैंडबॉक्स में टेस्ट कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें। दैट वाज अ, आई वुड कॉल इट वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, बिकॉज उसके नतीजे में आज पाकिस्तान में जितनी इंपॉर्टेंट फिनटेक के बिजनेस मॉडल्स हैं वो सारे के सारे 99% एसईसीपी सैंडबॉक्स से निकल के आपके सामने आए। So a lot of models you don't know, but they actually exist in Pakistan, और वो SECP sandbox से आए। So these are the two important developments जो कि हुई हैं, जिसके नतीजे में ऑनलाइन बैंकिंग इंप्रूव हुई है। ऑनलाइन बैंकिंग के कस्टमर्स आप देख रहे हैं कि 16 मिलियन जो है वो मोबाइल बैंकिंग यूजर्स हो गए हैं, 11 मिलियन अराउंड इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स हो गए। लेकिन एक चीज जो कि आज हम फोकस करेंगे, जो जोरा पॉइंटेड आउट, कि इन्वेस्टर बेस किस तरह बढ़ा जाए। आई थिंक दैट सफाइसेस योर क्वेश्चन जोरा। Ji, excellent start, Baqar. I will now turn towards Dr. Ammar if he's online. Thank you. Again, I will pose the same question to you in your experience. How can universities play their role in educating students towards this area? And secondly, how universities can play a role in educating policymakers and regulators with respect to fintech development, because that's also a gap that we kind of face. I can't hear you, Ammar. You're mute. Can you hear me now? Yeah. Thanks for the opportunity. I would just say, like, in Pakistan, if you see that fintech is considered as something new, but around the globe, if you see, it's not a very recent phenomena growing. But yes, it's rapidly growing very fast as compared to the conventional finance because it has a more scope. So Pakistan mein, if you see right now in academia side, it's very few universities who are offering fintech as a degree program. If you see, yes, in electives, you will find out some universities जो offer कर रहे हैं, but generally it's like an elective, एक दो course होंगे जो fintech से related करा रहे हैं. But Iqra University is leading this program in terms of a degree. और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में एंड ऑल ओवर पाकिस्तान जो कि डिग्री प्रोग्राम फुल्ली जो फोकस्ड है फिनटेक को लेकर. तो दैट्स लाइक इनिशिएटिव डन बाय द एकेडमिक साइड. बट येस, वी नीड सम फ्रेमवर्क मॉडल्स. ऑब्वियसली इट्स अ न्यू प्रोग्राम, सो ज़ाहिर है वो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है उसकी.
So what we are seeing right now is students are also trying to, because they don't know about it, so we are trying to first create about awareness about it. तो उसमें हमें थोड़ा initially problems आती हैं, because generally लोगों को बस वो basic business की fields पता है, marketing, finance and जो basics हैं HR. लेकिन जो fintech है, it's a new field, so obviously first we need to create awareness among the students कि this is also somewhere which is the future of finance. So conventional finance अपनी run कर रही है, obviously वो अपनी जगह है, but we are now focusing towards the advanced level. As you know कि AI के involvement आ गई, आजकल students को बहुत ज़्यादा उसका भी एक चार्म दिख रहा है कि AI है। तो हम जब fintech की बात करते हैं तो उसमें AI का भी बहुत बड़ा portion है which is included in it. So right now we are facing these things. प्लस जो हमें इश्यूज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जाहिर है अभी हमारे पास, अगर मैंने देखा भी था कि जो रीसेंट हमारे पास फिनटेक की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में एज कंपेयर टू द वर्ल्ड इट्स वेरी स्मॉल. वी आर ऑलमोस्ट लाइक 100 अराउंड समवेयर 100 जो कि फिनटेक बेस्ड कंपनीज हैं. उसमें भी स्केलेबल साइज होगा जाहिर है, एक हमें वो चेक करना पड़ेगा. बट उसके जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो लोगों को भी पता लगता है कि यस दिस इज न्यू एरिया विच इज मोर ल्यूक्रेटिव और इसकी भी एक डिमांड है. बिकॉज स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज जहाँ पे उनको जाहिर है जॉब की सिक्योर हो और उनको लगे कि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है. So we are trying to now engage industry as well, because we are engaging वो sizable जो हमारे पास इंडस्ट्री में अवेलेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को आए हैं, वो बताएं कि दिस इज ऑल्सो हैपनिंग. एंड राइट नाउ लोगों को बस ये पता है कि जैज हो गया, इजी पैसा हो गया, रास्ट इट्स अ गुड एग्जांपल बिकॉज नाउ स्टेट बैंक हैज मार्केटेड इट वेल और लोगों को पता लग रहा है. और उसमें भी उनका की फीचर ये कि इट्स फ्री, सो दैट्स एन इंसेंटिव फॉर द पीपल टू अडॉप्ट इट. सो स्टूडेंट्स आर गोइंग दिस साइड एंड हम लोग तो रेगुलरली स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं. सो वी गेट लॉट ऑफ क्वेरीज जो कि पहले नहीं आती थी, बिकॉज वी इनिशिएटेड लाइक अराउंड 1.5 year back. So now we are getting more queries कि yes this is the field we want to join, but they don't have the details of it. Fintech looks very glamorous, but obviously इसके अंदर आपको थोड़ी IT की knowledge भी होती है, programming की भी requirements हैं. It's not like a purely business program. So इसलिए तो हम थोड़ी सी जाहिर है कॉम्प्लेक्स है, तो हमें स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है. एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्योंकि वो जस्ट हमने MS किया है ऑफर, तो अंडर लेवल पर तो ये है नहीं, तो डेफिनेटली उनकी बेसिक्स जो है हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है. तो हमने जो करिकुलम डिजाइन किया हुआ है HEC से भी अप्रूव्ड है. तो आई गेस हमारे जो थर्ड पैनलिस्ट है उसको बताएंगे भी कि जो करिकुलम बना हुआ है वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इम्प्रोवाइजिंग डे बाय डे. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फॉलो इट. Great. Thank you. And yes, my next question is directed to Ms. Noshaba, और वो इसी context में कि how HEC views its role in encouraging startups and integrating key fintech related concepts in curriculum to prepare students in context of this evolving financial landscape. Ms. Noshaba. Thank you, Zora. I think a lot have been explained by the earlier guests जो हमारे हैं working in the field. Somehow fintech we have a very limited number of experts available. So this is how we know each other across, that word is small, and then when we look at Pakistan, so the area or जो हमारा house है of academia and the academician whole HEI sector, so it's kind of a limited number. When we talk about fintech, तो एक चीज जो इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली फिनटेक पे बात करें, एक चीज में it's pertinent to quote here is that it's not only fintech, which is the combination of 2 or 3 interdisciplinary exchange, or you can say that, sorry,
And exchange of different subjects together. So this is how things are moving on. There are multidisciplinary things which are coming up with a new discipline created, like आप mechatronics ले लें, combination of different technologies with mechanical engineering. So जो specific एक field में like finance alone and the tech alone, इस तरह नहीं, अब combination चल रही है. So HEC and our HEIs are fully prepared to cater such new initiative, innovations coming up in the way of syllabi और जो curricula है, उसी की तरीके से as per practice अगर हम देखते हैं तो in HEC after every 2 to 3 years we go for the complete revision of curricula जो किसी एक discipline का होता है, which also include introduction of new disciplines जिस तरह से fintech है, जैसे डॉक्टर अम्मार सैट के अभी हमने MS स्टार्ट किया, बट आई एम हैप्पी टू कोट के BS लेवल पे भी अब आपको नजर आ रहा है. फास्ट को देख लें, माजू को देख लें, दे आर ऑफरिंग डिसिप्लिन एट BS लेवल एज वेल, so that anyone or the student interested to go for the fintech, there's the ample knowledge available now, at least के जो जितना भी हमने सफर किया. वो कहते हैं ना कि when there's problem there's an opportunity. So the COVID turns to be an opportunity for across the globe अगर हम देखें, not only for Pakistan, because people have started working in the digital phase. When we talk about digital economy के बारे में, I happen to visit China, और वहाँ मैंने देखा कि they have the China is the best example of digital economy के अंदर. आप देखें कि वहाँ पे जब मेरा visit था तो I wasn't kind of prepared for that, क्योंकि जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो उनका जो अली पे है, उसके ऊपर उनका जो एक वेंडर था रेडी वाला, वो भी उसको यूज कर रहा था. सो दिस मीन्स के जो लगता है कि भाई फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी का रन करना इज वेरी डिफिकल्ट, वो वैसा नहीं है. और व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशंस में तो यू नो के हमारे पास ऑलरेडी एक एम्पल रिसोर्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे प्रोफेसर हज़रात हैं, PhDs हैं, दे ऑल्सो गो फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ देयर नॉलेज कंटिन्यूसली. ये नहीं होता कि भाई आपने मास्टर्स किया. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी भी मिसाल, आई एम नॉट इन द टीचिंग फील्ड, लेकिन स्टिल अगर मैं बताऊं तो आफ्टर डूइंग माय डिग्री एंड बीइंग एसोसिएटेड विद HEC, मैंने इतने स्पेसिफिक कोर्सेज इसके ऊपर किए जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, विच इंक्लूडिंग जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से इस पे बिजनेस इंक्यूबेशन के ऊपर स्पेसिफिक जो मैंने कोर्स किया US से किए. तो दिस मीन्स के नॉलेज के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनहेंस होता है. और जो फिनटेक के बारे में जो इनिशिएटिव SECP ले रहा है, मेरे ख्याल में जो रेगुलेटेड इकोनॉमी का जो हमारा ख्वाब है पाकिस्तान का, वो इसी तौर पे सही हो सकता है कि हम मूविंग टूवर्ड द डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम जाएं. और फॉर द स्टार्टअप फेज अगर हम बात करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम HEC प्लेटफॉर्म, जैसे आपने अर्लियर अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, वी हैव एस्टैब्लिश्ड business incubation centers across in many, around 35, 38 university, public sector universities, while 16 are working in the private sector universities, and they are providing ample support to the startups so that their hand holding can lead them for connecting them with the VCs. If we look at the global report of 21-22 on VC deals के अंदर अगर हम देखते हैं, so after blockchain which stand at 8%, 4% जो इन्वेस्टमेंट आई है वो फिनटेक के अंदर आई है. So I think फिनटेक has a very important role.
बट वी नीड टू डील इट वेरी कॉशियसली, जैसे उन्होंने भी बताया, बाकर साहब ने भी, कि इसका जो साइबर के अंदर और जो साइबर सिक्योरिटी का एलिमेंट है, सो दैट के फुल प्रूफ और आपका डेटा सेव डेटा के अंदर काम जो है वो अभी हमने काफी मजीद इसमें करना है. बट रास इज अ गुड एग्जांपल, जास कैश इज, इजी पैसा इज वेरी गुड. मैं नहीं यूज करती, बट माय किड्स आर यूजिंग, इवन बीइंग अ स्टूडेंट्स, तो उनके लिए इजी पैसा. अभी तो कभी नोट्स भी उनको कॉपी करने होते हैं तो दे गो फॉर इजी पैसा. तो दिस इज द एग्जाम्पल कि वो लोग जो फिनटेक नहीं पढ़ रहे, द स्टूडेंट हु आर नॉट गोइंग फॉर द फिनटेक, उसका बैचलर में या उसमें, लेकिन किसी और डिसिप्लिन में, दे हैव एम्पल नॉलेज. सो वी आर होपफुल कि हम रेगुलेटरी इकोनॉमी के अंदर और डिजिटल इकोनॉमी के अंदर वी विल बी ब्रिंगिंग चेंज सून, इंशाल्लाह. एक्सीलेंट. एंड आपने 2 पॉइंट्स बेसिकली एड्रेस किए इसमें. एक तो कोविड का इफेक्ट, वो अगेन आगे ज़रूर मैं डिस्कस करूंगी. एंड उससे पहले बाकर, इफ यू कुड जस्ट शेयर योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ SECP's regulatory sandbox, and without being very harsh, if you can rate how was your experience and what challenges did you see or now you see in this respect? All right. Thank you very much. And I would not be harsh. It was wonderful experience, by the way. और ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि रेगुलेटर्स आपके ईमेल एक्सेस के ऊपर, फ़ोन के एक्सेस के ऊपर मौजूद थे, and they guided you through the whole process of testing, retesting, suggesting guidelines, and then improving the guidelines. So it was an excellent exercise in line with global standards. It was an excellent initiative जो SECP ने किया. Now 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पहला स्टेप SECP ने ले लिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की रेगुलेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा के पाकिस्तान में. नाउ लेट्स फेस द रियलिटी. मिस नौशाबा मौजूद हैं, डॉक्टर अमार मौजूद हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में फिनटेक प्रोग्राम ऑफर करती हैं. आई चैलेंज यू, कोई एक प्रोग्राम नहीं है जिसमें SECP की जो इनोवेशन जो SECP ने की है सैंडबॉक्स के अंदर, उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके. सो दैट्स वेयर द इनोवेशन गैप एक्सेस. तो इंटरनेशनली तो बहुत चीजें इंटरनेशनल करिकुलम के अंदर मौजूद हैं, जिस तरह नौशाबा ने करेक्टली हाईलाइट किया, लेकिन लोकल इनोवेशन जो SECP कर रहा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम कर रहे हैं. सो माय फर्स्ट सजेशन वुड बी विद रिगार्ड्स टू SECP सैंडबॉक्स एंड HEC कोलैबोरेशन वुड बी, लेट्स जस्ट डेवलप अप अ गाइड जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो फिनटेक इनोवेशन हुई हैं उनके बारे में बताया जा सके, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ चुका है, जो हर स्टार्टअप्स, लेट्स से नौशाबा करेक्टली पॉइंटेड आउट के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत तेजी से फैले. अब बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में इंजीनियरिंग की इनोवेशन या ऑफिस फॉर रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन के थ्रू इंजीनियरिंग की इनोवेशन तो हो रही है, लेकिन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में फिनटेक की इनोवेशन क्लॉग्ड है. द नंबर 1 रीजन इज कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और गाइडेंस और प्रोसेसेस SECP ने बना दिए हैं, जो कि इन प्लेस हो गए, वो एकेडमिक साइड पे बिजनेस इंक्यूबेशन या ऑरिक तक नहीं पहुंचे. लेट्स जस्ट डू दैट एज फर्स्ट स्टेप, बिकॉज ये एक आपके लिए इनोवेशन की एक नई फाउंडेशन खोलेगी. फॉर एग्जाम्पल क्राउड फंडिंग दुनिया भर में हो रही है. क्राउड फंडिंग आपने अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया. रियल एस्टेट एसेट फ्रैक्शनलाइजेशन दुनिया भर में हो रही है, दुबई में हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है, आपने अब फ्रेमवर्क बना दिया है. रोबो एडवाइजरी दुनिया भर में हो रही है, आपने अब फ्रेमवर्क बना दिया है. सो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जो फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की इनोवेशन कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर देना थ्रू अ गाइड jointly done by fintech companies, HEC and SECP, जो कि एक फ्रेमवर्क दे दे कि हाँ ये प्रोसेसेस हो चुके हैं, इस प्रोसेस को इस तरह चलाएं. That would be the first step to actually commercialize a lot of developments that SECP Innovation Office has already done. So we just need to build on top of it. So this would be my first recommendation and the core and only recommendation, by the way, कि ये एक पहला स्टेप हम कर लें. तो इससे आपने जो SECP ने ऑलरेडी बहुत सारी गाइडलाइंस बना दी हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएंगी, वो HEC के थ्रू
लागू हो जाएंगी इन फिनटेक प्रोग्राम्स एंड जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल के ऊपर उसको परमिएट किया जा सकता है. थैंक यू. Ms. Noshaba and Dr. Ammar, if you can add briefly जो बाकर ने चीजें अभी highlight की हैं. अच्छा, करेक्टली हाईलाइटेड बाय बाकर. इसीलिए देखें, जब व्हेन आई स्टार्टेड हियर टीचिंग एट इकरा यूनिवर्सिटी या लोकल यूनिवर्सिटीज, what I found is that students are missing basic financial literacy key education, which was a major setback for me. Like, how is it possible that business students and they don't even know how to open a bank account, they don't have any e-wallets. So what we try to do is this was the gap what we find, and हमने फिर उसके बाद स्पेशली हमने कोशिश की कि हम इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करें. फर्स्ट कोलैबोरेशन वी स्टार्टेड विद इन्वेस्टर लाउंज, थैंक्स टू बाकर, रियली एनर्जेटिक गाय. उनके साथ हमने फाइनेंशियल सिमुलेशन बेस्ड और फाइनेंशियल लिटरेसी को फोकस करते हुए हमने कोशिश ये की कि हम सिमुलेशन बेस्ड जो है वो फाइनेंस के अंदर चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें. So what we tried to did is that we did a competition kind of for the students, जिसके अंदर simulation हुई थी हमारे पास exactly of the PSX. There were like 4,000 plus students who participated in it, or we get in really good feedback from them because they explored and they got the flavor of real trading and investing, and somehow we did some sessions for the financial literacy as well. So briefly तो मैं ये बता सकता हूँ कि we are trying to take initiatives which were baby steps towards how to deal with this problem, but with the help of SECP as well. Now what we are focusing is that we get like a proper kind of framework where business models are being encouraged, because in Pakistan right now we need serious kind of startups जो कि we are missing. So hopefully in future with HEC as well, we are working very closely and tightly, and HEC is always available for us to dispose of the things which is required. So we are trying hard, and plus, as Noshaba said, that this is we are going in right direction, and we are pushing hard to this. And it's not only about fintech, and other stuffs as well are growing. But what we need to see is that the pace which we need to follow is really fast. जब से AI आया, you see that every content is moving really fast. अगर हम इसको ahead नहीं सोचेंगे जो आने वाला वक्त है, तो we would be left far behind. सो AI के आने के बाद और उसको इंटीग्रेट होने के बाद हर फील्ड में वो इंटीग्रेट हो रही है. आप देखें व्हाट्सएप तक के अंदर वो इंटीग्रेट हो रही है. So what we can see is that technology is adopting really with a fast pace. So we need to make a program as well, which would be like 4-5 years ahead, because what we are teaching right now, the students will be going into the fields within 2 years. So we would be thinking ahead of time, not right now जो हो रहा है. So that's why what when we are planning our student projects and simulation based चीजें, तो वो हम कोशिश करते हैं, we prepare them for the future approach. So hopefully in future as well, we are trying our best. Thank you, Dr. Ammar. Ms. Noshaba, if you want to add briefly. Yeah. I think I totally agree with Mr. Baqar in regard to के जो knowledge है of the student should be improved about the local happening as well. So believe me, and do have trust in us कि जो हमारा collaboration with SECP जा रहा है, although still flow of information a bit slow, लेकिन it will grow up. मतलब उसके लिहाज से when there was no connection, when both were not talking to each other or not coordinating, actually the problem of Pakistan is not that institutions or the organization or the people are not available to work for on one line. The basic problem of Pakistan is that we don't
believe in coordinating effort. So the coordinated effort is basically the need of the day. So this means that whatever is happening at SECP should be communicated not after happening, beforehand, so that the knowledge flow is काफी speedy ho, so that the same is shared from the HEC platform with the universities. And now, as SECP itself is directly linked with the institutions, हमने उन सबको link करा दिया है. So the flow of knowledge and information जो है वो अब काफी speedy होगा, जो हम सोच रहे हैं. और I don't think कि जो इंफॉर्मेशन सैंडबॉक्स की है या कोई और इंफॉर्मेशन जो SECP के रूल्स या रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उसकी नॉलेज में नहीं है. एक्सक्यूज मी अगर मेरी नॉलेज कम है, लेकिन मैं इसको इतने ट्रस्ट से इसलिए कह सकती हूँ कि मेरी अपनी डिग्री तो 1990s के जमाने की है, राइट. एट दैट टाइम जब हम स्टूडेंट थे, तो जो मेरे प्रोफेसर थे, मेरा बैकग्राउंड भी मैनेजमेंट साइंसेज और ये इसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है. तो हमारा जो टीचर होता था वो तो हमें अपने पाकिस्तान की नॉलेज पहले प्रोवाइड करता था. और जो हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम से एट दैट टाइम हम डायरेक्टली जो है, मैंने इंटर्नशिप की PIA के साथ, इंटर्नशिप कमर्शियल बैंक्स के साथ मेरी, और वो PDA है उधर हमारी की, और फुल फ्लैज हमारा उसमें क्रेडिट आवर्स होते थे और सारा कुछ. तो अब तो वो पुराना जमाना था. अब तो इससे बहुत आगे स्टूडेंट खुद भी बहुत सीरियस हो गया है. बीइंग अ मदर ऑफ 2, आई नो मेरा बेटा भी अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में है. सो आई नो कि वो कितना विजिलेंट होता है और हाउ क्रिटिकल ही इज अबाउट के उसका जो क्रिटिक मैं सुनती हूँ ना, तो अक्सर मुझे चैलेंज कर रहा होता है. एंड द टाइम व्हेन दे गो फॉर द इंटर्नशिप, तो वो नहीं होता कि जी बस मुझे सर्टिफिकेट मिल गया एंड दिस इज डन. नहीं, दे देमसेल्फ आर पुशिंग टूवर्ड्स के जिस मकसद के लिए हम आपके पास हैं, सो वी नीड दैट नॉलेज फ्रॉम यू. तो मेरे ख्याल में जो टीचर है आज का, उसके लिए उसका रोल बहुत मुश्किल हो गया. बहुत मुश्किल इन अ सेंस के इंफॉर्मेशन का फ्लो फॉर द स्टूडेंट इज एट वन क्लिक. सब बच्चा गूगल से, यूट्यूब से पढ़ के जाता. तो वो प्रिपेयर हो के क्लास में ना आए, उसको ना पता हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दैट आई डोंट बिलीव. सो ये थोड़ा सा मेरा है, लेकिन आई डू एग्री विद हिम कि ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो इट शुड रीच देयर. Great. और I think बाकर का main point ये था to formalize whatever is being done. बाकी we are aware, बल्कि अभी बहुत अच्छी participation है, which I'm seeing in the webinar, which itself is very reassuring. And I'm sure बहुत सारे students आपके through connect हुए हैं, and even this is a way of communicating that दुनिया काफ़ी आगे जा रही है और SECP भी कोशिश कर रहा है catch up करने को. Now again जो पहला सवाल या पहली डिस्कशन हमने की थी, उसमें इंक्रीजिंग इन्वेस्टर बेस की बात की थी. सो बाकर, इफ यू कैन जस्ट क्विकली इलैबोरेट के क्या 2-3 की स्टेप्स हो सकती है जो इन्वेस्टर बेस को बढ़ाएं, या क्या उसमें स्टार्टअप्स और फिनटेक जो है वो अपना रोल किस तरह अदा कर सकता है, लाइक जस्ट ब्रीफली. Sure, Zora. Thank you very much. I agree with Noshaba. There are two kinds of teachers. One is dynamic teacher, जो कि पहले से सब चीजें पढ़ के आता है. And then second kind is laggards, जो कि ड्राइव होते हैं. वो जो लास्ट वेव ऑफ पुश होता है ना, जो SECP की तरफ से आता है जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, वो उसके साथ चलते हैं. So that last wave of push, this is something that Zora and I were focusing on, कि एक जगह कर दे. I think एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक जोरा ने आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्टर बेस किस तरह बढ़ाया जाए. नाउ मैं आई गो टू इंपॉर्टेंट फिगर्स. वन इज पाकिस्तान में अभी इक्विटी इन्वेस्टर बेस कितना है? 3,13,000 के लगभग इक्विटी इन्वेस्टर्स है पाकिस्तान में. अब दूसरा कॉन्ट्रास्ट देखिए आप,
टोटल यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट जो HEC की वेबसाइट पे लास्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक है वो 2.2 मिलियन के लगभग है। आई एम श्योर इससे ज्यादा हो गई होगी अब। सो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री का इन्वेस्टर बेस इस 3,13,000 और 2021 के यूनिवर्सिटी इनरोल्ड स्टूडेंट्स की तादाद 2.2 मिलियन। अब इसमें से एक बड़ा सेक्शन है जो कि बिजनेस और फाइनेंस एजुकेशन पे फोकस करता है। नाउ लेट्स बॉइल डाउन टू द सेकंड क्वेश्चन। बहुत सारे बिजनेस के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट कर जाते हैं विदाउट टेकिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर इनटू कैपिटल मार्केट्स, जिनका बेसिक कोई इन्वेस्टर अकाउंट ही नहीं खुला होता, जबकि दुनिया भर में स्कूल कॉलेज एजुकेशन से फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं। और उसका एक रिस्क फ्री मेथड ये होता है कि बहुत ही ज्यादा रिस्क एवर्स इंस्ट्रूमेंट में उनको पहला स्टेप लेने में मदद देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ले ले, उसकी सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग भी हो जाए और वो आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में भी दाखिल हो। नाउ दीज टू फिगर्स एक्चुअली कम्युनिकेट वन थिंग कि यहाँ पे नाउ वन एलिमेंट इसके फिनटेक की क्या डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन उससे पहले जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस का करिकुलम है, अगर उसके अंदर जिस तरह नौशाबा ने पूरा लीड किया बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स को, अगर उसी तरह से फिनटेक लैब्स बना दी जाएं। बाय द वे टॉप 3 और 4 यूनिवर्सिटीज हैव द फिनटेक लैब इन पाकिस्तान, उनका सेल्फ इनिशिएटिव है, लेकिन जिस तरह HEC ने उसको पुश किया, फिनटेक लैब्स बना दी जाए और कम से कम बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए सिमुलेशन एक्सरसाइजेस को इंप्रूव बनाया जाए, करिकुलम में दाखिल कर दिया जाए, उससे एक मैसिव अवेयरनेस होगी, नंबर वन। नंबर टू, अब पाकिस्तान में 2 इंपॉर्टेंट इनोवेशंस हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। SECP ने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मिलके हर पाकिस्तानी के लिए आसान बना दिया है कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके। सो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, सिर्फ सॉवरेन रिस्क है, उसमें आप अपना पहला कदम ले सकते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर। कम से कम स्टूडेंट्स को सिमुलेशन के बाद ये पहला कदम दे दिया जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि वो एक तो एक्टिव इन्वेस्टर बेस बढ़ा सके पाकिस्तान का, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, HEC के बेंचमार्क्स भी अचीव हो, यूनिवर्सिटी भी कह सके कि हाँ हमने जो है इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया हुआ सिमुलेशन बेस्ड एक्सरसाइजेस के थ्रू। नौशाबा से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमने 20 यूनिवर्सिटीज से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ये पायलट प्रोग्राम्स रन किए, आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। अब हम अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जो टॉप PhDs के प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट हेड्स हमारे साथ इन्वॉल्व रहे हैं, हम आपको वो उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। आप ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड बाय द वे, तो हमसे बता देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स इस तरह स्ट्रक्चर हुए हैं। दैट विल बी अ की स्टेप कि SECP और कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस का लेट्स से 2.2 मिलियन है, अगर इसका 20% भी UIN एक्टिवेशन या यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बना ले और इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेट्स से 5,000 रुपए से इन्वेस्ट कर ले, अगर इस्लामिक प्रेफरेंस लगता है तो सुकूक में कर ले, अगर कन्वेंशनल है तो 5,000 रुपए से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे। नॉट ओनली इट्स अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, it's a first practical step to give exposure to students about how capital markets and investment management works. अगर 20% भी कर ले तो आपका 3,13,000 का जो इन्वेस्टर बेस है वो डबल हो जाएगा, बिकॉज 20% लगभग 4,40,000 इन्वेस्टर्स बनते हैं नए, जो कि यंग है, डायनामिक है। ये स्पेस हमने छोड़ी हुई है, इस स्पेस को अब इलीगल एसेट क्लासेस ने ऑलरेडी ले लिया है। अब बच्चे को आप अगर क्लास में बोले कि आप में किसने इलीगल क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर बोले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, इन्वेस्ट किया, तो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। सो हमें ये स्पेस भरनी है with awareness and simulation based exercises in universities. So I think this is the number one key step that we would recommend and request HEC, SECP and universities to bring in and do a collaborative effort. एक्सीलेंट। और आज का जो सेशन था पर्टिकुलरली उसमें ये सबसे मेन एस्पेक्ट था कि कोलैबोरेशन, एक तो नंबर वन कोलैबोरेशन बिल्ड हो, एंड सेकेंडली ये कि ग्राउंड्स हम देखें कि किन एरियाज में कोलैबोरेशन हो सकती है, इन एडिशन टू अवेयरनेस सेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाने की जरूरत है, एंड आई एम ग्लैड बाकर आपने बहुत एक्सीलेंट आइडिया दिया। आई एम श्योर
HEC इसको ज़रूर कंसिडर करेगा। ज़ाहिर है उसकी फॉर्मेलिटीज़ या वर्कबिलिटी बाद में की जा सकती है फाइनलाइज। अगर मिस नौशाबा थोड़ा सा इलेबरेट करें जो इनोवेटर सीड फंड प्रोग्राम है, आई थिंक उसकी भी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड आई वुड लाइक कि अगर उसके ऊपर थोड़ी सी आप इलेबरेट हमें कर दें कि वो क्या प्रोग्राम है और किस तरह उससे बेनिफिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली जैसे आपने शुरू में भी बताया, आई बीन वर्किंग विद HEC सिंस HEC इज इसकी इंसेप्शन के साथ ही आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ पायनियर टीम जिन्होंने HEC की बुनियाद रखी है और यहाँ तक ये सफ़र हमने तय किया। इसमें जो हमने इनोवेशन के अंदर जितना भी काम किया उसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस आए। फॉर एग्जांपल जब हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रहे थे तो भी यूनिवर्सिटीज से ही चैलेंज आता था कि भाई यूनिवर्सिटीज आर नॉट मैंडेटेड फॉर रनिंग बिजनेसेस और सपोर्टिंग बिजनेसेस। इनका काम तो नॉलेज क्रिएशन है विच दे आर डूइंग और बच्चों को पढ़ाना है। और फिर उसके बाद जब हमने कहा कि भाई जो रिसर्च हो रही है उसको इम्पैक्ट करना है और ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन का हमने कहा कि ये एस्टेब्लिश हो, उस वक्त नोबडी वाज रेडी टू। और अब ये हाल है कि दे आर आफ्टर अस के हमारा नोटिफाई कर दें और हम कहते हैं नहीं जी ये पूरे प्रीरिक्विजिट पूरे करें। तो दिस मीन्स के चेंज आपका ओवरऑल चेंज जो है वो आ रहा है। और बाकिर साहब ने जिस तरह से जो सजेशंस दी हैं तो we are happy to or we are ready. HEC is already ready. हमेशा से we welcome to the new initiative, new ideas for open for innovation के अंदर जो एक चीज जो गैप क्रिएट करती है, जैसे इन्होंने भी राइटली आइडेंटिफाई किया, उसके अराउंड पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। And ISF was that my idea of looking for the gap and then building upon the gap की facilitation और support mechanism. So जो मेरी अपनी लर्निंग है वो ये मुझे जो बेस्ड अपॉन जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बता रही है कि VC फंडिंग या क्राउड फंडिंग या सीरियल A और B तो दूर की बात है, अभी हमारे पास पाकिस्तान में प्री सीड और सीड फंडिंग ही अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए गो के ये गवर्नमेंट का रोल नहीं है कि ये चीजें अवेलेबल करे, इसमें बहुत रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है कि वो ये इन्वेस्टमेंट्स लेके आए और स्टूडेंट्स को हेल्प करे। तो जब मैंने देखा कि भाई ये लैक करता है तो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, वर्ल्ड बैंक से हम कुछ नेगोशिएट कर रहे थे, तो उसमें कोई 5 प्रोग्राम्स मैंने कंसीव किए एंड देन नेगोशिएटेड, और लकीली कुछ ऐसा हुआ कि वो पांचों के पांचों ही अप्रूव हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा सक्सेसफुली वो रन हुए। एंड इनोवेटर सीड फंड का आइडिया ये था कि हमारे पास जो इंक्यूबेशन सेंटर तो हमने बना दिए, बच्चों को वहां हैंड होल्डिंग भी हम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, उनको बता रहे हैं भाई कंपनी कैसे बनानी है, रजिस्टर कैसे करना है, सारा कुछ उनके आइडिया को लैब्स की एक्सेस दे रहे हैं सो दैट कि अगर वो बायोटेक से है या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो वो सारी जो रिसोर्स है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो लैक करता है वो ये कि इनको वहां पे खड़ा करना कि जब ये मार्केट में आगे आए और अपना पिच डेक मजबूती से एक इन्वेस्टर को पिच करें, उसके लिए भी तो उनको सफर तय करना है जिसमें उनको ट्रैक्शंस देखनी है, जिसमें उनको वैल्यूएशन अपनी कंपनीज की करनी है। इस सब को पैसे के बगैर आप नहीं कर सकते, और यू नो के स्टूडेंट के पास तो पैसा होता नहीं है, और हम जैसे माँ बाप जो हैं वो पैसा देते भी नहीं है इतना इजीली कि भाई आप इसको डुबो दें। सो बहुत कम लोग होते हैं कि वो रेडी के वो रिस्क ले सकें, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो नाम ही रिस्क का है। तो ये जो इन्वेस्टर सीड फंड है, हमने ये कहा कि भाई जो इंक्यूबेशन सेंटर में जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, लेट इनहांस देयर कैपेसिटी, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, इनको compete कराएं, और फिर ये हमारे पास जो तकरीबन
अबाउट 400 आइडियाज आए और उनको हमने जैसे बाकर साहब जैसे और लोग थे, डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे, नॉट ओनली द फिनटेक, इट वाजंट लिमिटेड टू द फिनटेक, हमारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर एग्रीकल्चर भी था उसमें, फिनटेक भी था उसमें मैन मेड मटीरियल्स के हवाले टेक्सटाइल था उसके अंदर, उसके टेक्नोलॉजी का जो इंजीनियरिंग वाले हैं, मैकेनिकल, सिविल और सारा कुछ शामिल था उसमें। तो उसमें से फिर हमें तकरीबन 43 जो स्टार्टअप्स थी उनको हमने सीड फंड प्रोवाइड किया। बेस्ड अपॉन दैट कंपटीशन उन्होंने विन किया और इट वाज द अमाउंट ऑफ $35,000 की अमाउंट थी, तो जो हमने ईच कंपनी को दी। और उसके साथ साथ हमने उनको एक और सपोर्ट दी विच वाज कि उनको हमने 6 महीने का इंक्यूबेशन साइकिल के अंदर उनको मजीद रखा ताकि जो जो एम्पल सपोर्ट है इनको वो मिल सके। तो वो लकीली अभी हम प्लान कर रहे थे 29 को इन्वेस्टर कनेक्ट के ऊपर, और काफी फॉरेन से भी लोग उसमें थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक विजिट, आपको पता है बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट, उन्हीं डेट्स में अब वो हमारे साथ क्लैश कर गया, तो अब हम वो रीशेड्यूल कर रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया यही था कि अगर आपके पास अपना स्टार्टअप है, अगर उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हमें बिलीव करा सकें कि ये आगे ग्रो करेगा, तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। लेकिन अभी भी सफर बहुत, अभी आपको पता है कि बाकर साहब नोज बीइंग फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप साइड के कि अभी तो ये सीड फंडिंग से ये सीरियल ए और बी और सी और बहुत कुछ पड़ा है इनका जो ये लेके जाएंगे until they're able to pitch to the VCs. Actually, we have last 3 minutes and Dr. Ammar, in just a minute, if you can just conclude last thoughts, आपका क्या view है इस session के बारे में भी and how we can move forward. You have a minute. You're mute. जी, थैंक यू। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ऑब्वियसली इन 1 मिनट आई जस्ट पुट सम बुलेट पॉइंट्स। पहली चीज़ तो ये कि ऑब्वियसली वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोर्सेज मोर मच इनटू आवर करिकुलम्स, और बेसिक से हम उसे इंट्रोड्यूस कराएं तो दैट वुड बी मच बेटर। दूसरा जो था वो ये था कि हम वी आर ट्राइंग टू गेट द स्पीकर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री जो कि स्टूडेंट्स को जो है अवेयर भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे to come towards this kind of industry as well. तीसरे जो हम लोग फोकस्ड हैं वो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेस्ड हैं स्पेसिफिकली फॉर द फिनटेक इंडस्ट्री। उसके ऊपर हमारे कुछ स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं जिसके अंदर वर्चुअल वो एडवाइजर्स बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बना रहे हैं, और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो बेस्ड हैं इसके ऊपर कि जो इंडस्ट्री की गैप है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फिल इन कर सकें, बिकॉज यू ऑलवेज हियर दैट देयर इज इंडस्ट्री एंड एकेडमिया गैप जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके उसको कर सकें। बाकी दिस सेशन वाज वेरी ब्रिलियंट एंड आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। Thank you so much. And Baqar, you even have lesser time, like just half a minute. All right. So 2 important things. Number 1, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का करिकुलम का एक फ्रेमवर्क मिलके बनाए HEC, SECP, जिसमें SECP की जो इनोवेशन उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, so that you have a regulatory framework or the guidelines as to what needs to be taught to people in universities in business education, specifically fintech. उससे इनोवेशन आपकी बहुत तेजी से आगे ड्राइव होगी ताकि आपको लोकल इनोवेशंस को का एक्सपोजर मिलेगा। नंबर 2, एक बड़ी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो लोग जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड हैं उनको इन्वेस्टर बेस बनाया जाए, उसको इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने में लेकर आया जाए। कम से कम सिमुलेशंस को गाइडलाइंस इशू की जाए यूनिवर्सिटीज को ताकि वो सिमुलेशंस को इनकरेज करें, फिनटेक लैब्स का कयाम सिमुलेशंस को इनकरेज करें, और कम से कम पहला स्टेप लें कैपिटल मार्केट्स में दाखिल होने का। जस्ट दिस वन स्टेप कैन डबल द इन्वेस्टर बेस that you have in Pakistan. Thank you. Thank you very much. And मेरा ख्याल है कि आज का सेशन was fruitful, but मुझे लग रहा है शायद टाइम हमें मज़ीद रखना चाहिए था, but it was an excellent session. Participation was extraordinary. इसके अलावा जो की एरियाज हम टच करना चाह रहे थे वो थैंकफुली सारे टच हुए हैं, but we can I think I would at this forum request कि we meet again. We've got some questions we weren't able to address for you as well as for SECP. We'll address them separately.
But inshallah, till next session. Again, thank you for joining. And I'll just conclude by saying that it was an excellent session. Yes, but I'm glad that we have some concrete steps in the end जो हम pursue कर सकते हैं at institutional level. And I hope the participants found today's session helpful to increase their knowledge as well. Thank you very much. Thank you.